Hello everyone, and I welcome you back once again to Jabby's Kitchen. Today I'm here with an exciting and mouth-watering recipe of chili paneer. This is a vegetarian dish and most of the people love this Indo-Chinese food which is paneer and capsicum combination called as chili paneer. So let's quickly start how to make it. Let's begin with the ingredients. तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं हम चिली पनीर के इंग्रेडिएंट्स क्या है. सो फॉर दिस वी रिक्वायर दिस इज़ 2 मीडियम साइज कैप्सिकम डाइस्ड, 2 कैप्सिकम शिमला मिर्च डाइस किया हुआ, 2 अनियंस डाइस्ड, 2 प्याज डाइस किया हुआ, 8 to 10 क्लोव्स ऑफ गार्लिक, 8 से 10 लहसुन की कलियाँ, 3 ग्रीन चिलीज स्लिट, we have slit it and cut into pieces, 3 हरी मिर्च काटा हुआ. This is 250 grams of paneer, that is cottage cheese, 250 ग्राम पनीर, salt, नमक, red chili powder, that is लाल मिर्च, 2 tablespoon of gram flour, that is 2 tablespoon बेसन, 2 tablespoon of all purpose flour, 2 tablespoon मैदा, 1 tablespoon of corn flour, 1 tablespoon corn flour, vinegar, dark soya sauce, red chili sauce, green chili sauce and black pepper, काली मिर्च की पाउडर. तो आइए शुरू करते हैं हम बनाना चिली पनीर. very exciting and mouth watering dish. So friends, to start with, I will have to make the coating for my paneer. हम सबसे पहले पनीर फ्राई करने के लिए कोटिंग बनाएंगे. This is 2 tablespoon of all-purpose flour, 2 tablespoon of मैदा, 2 tablespoon of besan, that is gram flour. In this, we are going to add salt as per the taste. नमक हम टेस्ट के हिसाब से ऐड करेंगे. ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च की पाउडर, 1/4 टीस्पून, दैट इज 1/4 टीस्पून. हाफ टी स्पून ऑफ रेड चिली पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर. नाउ टू दिस वी विल ऐड लिटिल बिट ऑफ वाटर जस्ट टू मेक अ पेस्ट. इसमें हमने थोड़ा सा पानी ऐड किया है और हम एक पेस्ट बनाएंगे. बिल्कुल जिस तरह से हम पकोड़े को डिप करके बनाते हैं उसी तरह का हम थिक पेस्ट बनाएंगे. वी आर गोइंग टू मेक अ पेस्ट इन विच वी कैन डिप आवर पनीर एंड फ्राई द क्यूब्स. Everybody in the house will surely love it. So do try this recipe. Friends, for my all the videos you can follow me on Facebook and Instagram and also on YouTube in the name of Jabby's Kitchen. So see, I have made a very thick but a flowing paste. हम इस तरह से semi liquid गाढ़ा पेस्ट बनाएंगे. You can taste for the salt. आप नमक चखकर देख सकते हैं. Okay, salt is fine. So now let's begin quickly. So friends, here I have taken a pan and I have taken some oil in it to deep fry the paneer. हमने यहाँ पर इस कढ़ाई में तेल लिया है और अब हम पनीर को डीप फ्राई करेंगे. So mix this nicely. हम इस पनीर को इस मिक्सचर में डिप करेंगे. वी आर गोइंग टू डिप पनीर नाइसली इन दिस मिक्सचर एंड gently put it to fry. See that you don't burn yourself. आप बड़े ही आराम से कीजिए, आपको जल ना जाए.
So in this way we are going to fry all the cubes. This is a very simple but a very interesting dish. In this way we have to fry just like पनीर पकोड़ा. हमें इन्हें बिल्कुल पनीर पकोड़ों की तरह फ्राई करना है. बेसिकली हम पनीर पकोड़ा ही बना रहे हैं. And make it nice and crunchy. So you can see I've got a nice and golden color to my paneer. So it's time to remove it. आप देख सकते हैं पनीर अच्छी तरह से गोल्डन हो चुका है और अब हम इन्हें निकालेंगे. It's nice and crunchy as well. Wow. It's nice and crunchy as well. It's just wow. It's so beautiful. You can see. So friends, in this way we have fried paneer and it is looking awesome and delicious. मन करता है कि बिल्कुल ऐसे ही इसे उठाकर खा जाओ, but no, I have to complete my recipe. So let's begin with the second part of making our chili paneers. Now we are going to take some oil in a clean pan. हम एक pan में around 2 टेबलस्पून ऑयल लेंगे. 3 टेबलस्पून ऑयल लिया है. एंड वी आर गोइंग टू ऐड गार्लिक. हम सबसे पहले लहसुन ऐड करेंगे. रिमेंबर वन थिंग, द मोर ऑफ गार्लिक, द मोर ऑफ टेस्ट you will get in any Chinese dish. So it will be good if you can add more quantity of garlic. लहसुन ज़्यादा से ज़्यादा डालिए तो आपको कोई भी चाइनीज़ डिश में बहुत अच्छा फ्लेवर मिलेगा. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू फ्राई दिस गार्लिक फॉर अराउंड 10 to 15 seconds, नॉट वेरी मच. So now my garlic has changed the color and now I'm going to add green chilies and capsicum to this first. हमने अब शिमला मिर्च ऐड कर दिया है. We are going to fry this for around 2 minutes and then we will add the onions. हम इसे 2 मिनट के लिए फ्राई करके फिर इसमें हम प्याज ऐड करेंगे. Friends, we have to remember in any Chinese dish we do not have to overcook the vegetables. We just have to saute them lightly so that it is even crisp. हम कोई भी चाइनीज़ डिश में वेजिटेबल्स को पूरी तरह से नहीं पकाते हैं. हम इसे जस्ट 2 से 3 मिनट सौते करते हैं ताकि हमारी वेजिटेबल्स में एक क्रिस्पीनेस और क्रंचीनेस रहे. सो जस्ट fry it for 2 minutes only, not more than 2 minutes. So friends, we are frying this capsicum since 2 minutes. 2 मिनट हो चुके हैं हम इसे फ्राई कर रहे हैं. आप देख सकते हो थोड़ा सा कलर इसका चेंज हो गया है. एंड नाउ आई एम गोइंग टू ऐड द अनियंस. इसमें प्याज ऐड कर दें. And we will cook for another 3 to 4 minutes now. और 3 से 4 मिनट हम इसे मीडियम हाई आंच पर पकाएंगे, फ्राई करेंगे. सो फ्रेंड्स, इट्स अराउंड 3 मिनट्स. 3 मिनट हो चुके हैं हम इसे फ्राई कर रहे हैं. एंड द कलर्स ऑफ ऑनियन हैज़ बीन चेंज्ड. इट्स ट्रांसपेरेंट.
And now it's time to add our lovely sauces. 1 tablespoon of green chili sauce, 1.5 tablespoon of chili sauce, one and a half tablespoon of soya sauce, and now we are going to mix it nicely. हमने इसमें 1 tablespoon green chili sauce, 1.5 tablespoon of red chili sauce और 1.5 tablespoon of soya sauce ऐड किया है. Around half teaspoon only of vinegar. I'm adding only half. Wow, the smell is just awesome. It is beautiful. Now here I have taken 1 teaspoon of corn flour. हमने यहाँ पर 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर लिया है और इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड किया है और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे हम. And we are going to add to this. कॉर्नफ्लावर से हमारे चिलीज को थिकनेस मिलेगा, थोड़ी सी बॉडी मिल जाएगी. The cornflour paste will give a thickness to our paneer chili. If you wish, you can add little water as well, around half cup of water. Little bit of salt, a little bit of salt, थोड़ा सा नमक. इसमें हम ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे क्योंकि ये सारे सॉसेस में ऑलरेडी नमक होता है. And half teaspoon of red chili powder just for color. So mix this nicely. If you want this to be little more liquidy, you can add little by little water as per the thickness you want it. You can see this is looking just awesome and the smell is very nice. So now let me taste the sauce. This is looking lovely. Now one ingredient which I had forgot to show you is this 1 tablespoon of tomato ketchup. Finally you will be adding 1 tablespoon of tomato ketchup to this, which will give your dish a very nice taste and a texture. If you wish, you can also add 1 tablespoon of Szechuan chutney to this, which will also give a very nice flavor to your paneer chili. Or if you want, you can replace paneer with chili, replace paneer with chicken and make chicken chili with the same recipe. So here I have added 1 tablespoon of Szechuan sauce as well. It's got a beautiful color and it is really looking very nice. So friends, this is all done and now it's time to add the crispy fried paneer to this to make it chili paneer. And here goes the paneer. Just give it a nice mix and serve it hot. One tip to give you is you will add the paneer just before you serve. So do not add and keep the paneer, because once you add it and keep it, it will become soggy. So if you want to serve it nice and crisp, add the paneer to the chilies just before you serve it. So here I have mixed nicely and
My yummy delicious chili paneer is ready. And friends, if you have not yet subscribed to my channel, please do subscribe and please like my video, comment on my video how did you like it, and also share it with your family and friends. So this dish is really looking awesome, yummy yummy yummy. So let's dish this out quickly. So friends, here my chili paneer is ready and it is looking awesome, so very colorful, so very nice. No need to garnish it because it already has so many colors in it. So it is already looking very attractive and very nice. And now let me taste and tell you how it is and how successful is my recipe. So I will just let me taste and tell you how it is. Marvelous. I cannot speak at the moment. It is just too good. It is just a perfect recipe. So hope you will also try this recipe and do let me know how did you like it. Also follow me on Facebook and Instagram. Share my video with your family and friends and also comment on my video. Meet you another time with another exciting recipe of your choice very soon. Bye bye.